Next, we start with draw a flow chart that accept a number and check the whether it is a positive, negative, or zero. Okay, it is a question for you. Okay. Draw a flow chart that accept a number and check whether it is positive, negative, or zero. Number. You 0, then next it is showing you 1. Okay. A is equals to 8. As value is 0. So 0 is equals to 8. A is equals to 8. A is now S is now. Now A has 1. In B 1 is stored. Coming to S equal to now S is what? 2. 1 plus 1, 2. So A, B. 1 roila. B is equal to S. So B is equal to 2. A plus B हेले मोर 2 अछि B रे 2. S टा मोर केते गेल 1 S equals to A plus B. S equals to A plus 3 plus 2, 5 हबो. A is equals to B. तो A रे केते स्टोर हे गेला B रे केते स्टोर हो B रे S स्टोर हो माने B रे स्टोर हो माने 5 स्टोर हो होला फ्लो चार्ट So when you use the operation to perform the operation, what are the okay. 1 into 2 is 2, 2 into 2 4, 4 into 8, 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 6. अच्छा अच्छा हाँ हाँ এটা এটা না বোধে না ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣି ହଉଛି ତାପରେ n टा multiply हो n equals to 1 display n is equals to n into 2 ना
ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା ପଚରା ହଉଛି ମାନେ ମଝିରେ ଯୋଉଠି ତମେ false stop କର। No. 0 is not equal to 32. So, Hmm. 2 to the power 0. I. 2 to the power 0 is what? 1. 1. Hmm. Then it is here. It is 2 to the power 0. Then display n. Hmm. Then n is what? 1. 1 is 22. Hmm. No. No. Then n equal to the power I. 2 to the power is I will 1. 2 to the power 2. display 1. Then it is display you 2. Hmm. Okay. 2. Then Hmm. I value is 1. 1 plus 1 is 2. Now Hmm. it comes to here. 2 is 2. No. N equals to 2 to the 2. Hmm. 2 to the power 2 means it is सर एठी मते लागु आई हबो बोली मते 2 rest होगा ना. 32 रे स्टॉप हबो आमे जो इठी अछि जो डिस्प्ले n जो अछि सपोज n रे हमकु 2 मिलुछि तो ता परे आमे लाइक माने n इक्वल टू सपोज 2 टू द पावर 1 आई जगह रे 1 पडला जदी तो n इक्वल्स टू 2 हो जे हमरो ता पर आ स्टेप एटा इक्वल टू i प्लस किंतु सपोज n इक्वल टू 32 ता परटा को हमर तो करिया को माने दरकारी नाही ना मैं यहाँ करने हम 32 रेंज 32 आगे बुझे रहता है आगे next is pseudocode. The pseudocode is used to represent the logic of the solution to a problem. Okay, it is giving a solution to a particular problem. Like the flowchart, the pseudocode is also having some kind of keyword. Okay, like we're using double hash, it is used to represent a comment entry. The comment entry is used to provide the additional information about the step in the pseudocode. Okay, like we're using a annotation in the flowchart. So here we're using what comments. Okay. Begin and end is a block that encloses the step of the pseudocode. The first statement in a pseudocode is a begin statement and the last statement is a end statement. Okay. माने फर्स्ट स्टेटमेंट को जेतोले स्टार्ट कराबो बिगिन करके स्टार्ट कराबो accept is used to accept the input from the user. Okay. Then we're using a display. Display is used to display the output. Okay. Then we're using if else is referred to as a decision construct. It is used when depending upon a condition, different action may have to be taken. So you have to take a different action on it, if else.
means for the condition, means we are using a decision box in the flowchart. In the programmatically we are using if else part. If else. Okay. Hmm. Then while you want to repeat one statement more than one time, then we are using repeat until. So 3 looping construct we are using. One is repeat until, another is while loop, another is for loop. So these are the 3 construct it is used to repeat a statement more than one time. Okay. Next we are using call subroutine. Call subroutine is used to invoke a subroutine, subprogram or procedure that specify the subroutine name. Means it is divide the block into a smaller part. So that is that we have to use as a subroutine. So when you break it, okay, then after your work is over, then you have to call in a main module. माने ये कौन करिवो ना तुमरो जो प्रॉब्लम टा अछि एटा छोटा छोटा पार्ट रे डिवाइड करिवो आ सब पार्ट को हमें इंडिविजुअली ताको हैंडल करिवो आ तापरे हमें मेन मॉड्यूल को कॉल करिवो. So for that we are using call subroutine. Okay. सर एगोडा पूछ आगे में के Consider an example. To add the two number. Okay. So start the algorithm, then accept the two number, then number, then display the sum and end of the algorithm. Okay. So this algorithm the two number, of the number, and display the sum, end of the algorithm. Now, the algorithm we represent in the flow. Number 2. Then we are using sum equals to number 1 plus number 2. This sum. Then end of the algorithm. In form of with numeric n1, n num2 and n sum. Okay. Then display enter a number. Then accept a number. So after display, then we are accepting a number. Accept. Then display enter a number. Then accept another number. Okay. This is the input from you. Then we accept. Then display enter a number. Then we accept. Then we add the two number, and it shows the result. Understood? सर जो लास्ट वाला माने सबुथरो लिखा होची नंबर जगह रे n लिखा है कि स्टार्ट करा होची n तापर नम लिखा है छि हां एटा कोन पे लिखा होची सेटा कोन आई लिखा भी है जे लास्ट को जो द सम ऑफ नंबर्स इज प्लस n सम तो आगो जो ये है सेटा नहीं होची हमको जो डिस्प्ले कर माने यूजर एटा सिंगल क्वेश्चन मैं यूजर को मांगू छे ना एंटर ए नंबर एटा सिंगल कोटेशन में पास आला then display enter a number single quotation में पास आला तापरे एटी मोर कोन नंबर दिटा ऐड हला ऐड हला पर मते पुनी डिस्प्ले करिवो कोन द सम ऑफ द नंबर इज n सम बुझला अच्छा n टा कोन पे यूज कराउ जे हमें जो भी वैल्यू हमें नौ जे so that is a numeric value. So for the numeric value we are using n here. N norm1 is the memory location where you have to store the value. N is the it is pointing that norm1 will store the numeric value. Okay. अच्छा न्यूमेरिक बोले सेटा को n बोली सबरो स्टार्टिंग रे लेखा होची n न्यूमेरिक जिंस ओडा हां that variable will store the numeric जो n आगरो जो
ଆଉ n ଆଗର जो प्लस टा रहउची सेटा डिनोट कोन करची माने नंबर टा पॉजिटिव बोली डिनोट करूची ना अलगा किसी दीटा स्टेटमेंट को जॉइन करके शो करिया पई एट ए टाइम सेटा प्लस सिंबल यूज कर दैट इज ए कॉन्कैटिनेशन जेमती लास्ट स्टेटमेंट रे लेखा हिची हां हां लास्ट स्टेटमेंट रे सेटा एटा होची प्लस यूज कराइছে एठी कोन एठी एडिशन हला एठी हमें डिस्प्ले रे सेठी जदी तो हमें एडिशन हैला डिस्प्ले रे जदी हमें प्लस यूज करछे दैट मींस वी हैव टू डिस्प्ले the sentence as well as the number that we want to display ओहो सेंटेंस सहित नंबर टा रहयो बोली सेठी प्लस टा जोड़ा होची प्लस टा लिखा होची ओहो जदी प्लस न जोड़ा हला जो गोटे से शो कर दबो हां जदी माने प्लस टोटल टा शो लिखि करियो तांदे खाली एंड सम लिखि तांदे तले मोर रिजल्ट शो करतांदा खाली रिजल्ट शो करता था माने स्टेटमेंट आ लिखाई नता ना से स्टेटमेंट आ से बुझ बुझला यस सर so where does the execution of pseudocode will start begin statement on the begin statement it will start एटा जोटा पूर्वटा लिखथिले सेटा होजे सुडो कोड हां हां the big pseudocode is start with where begin and it will end in end okay this part is over in the next class we go for the elaboration of the pseudocode okay yes sir जो डेटा देले क्वेश्चन से डेटा कंप्लीट करके मु 1 आवर भीतर आपन को सेंड करछु व्हाट्सएप रे हां ठीक है थैंक यू सर